Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will define and explain energy and its types. So let's start. So energy can be defined as the ability of a body to do work is called energy. किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं बोला? एनर्जी कहते हैं। अब अगर आपके पास कोई जिस्म है या कोई बॉडी है और वो काम करने के काबिल हो, काम करने की सलाहियत रखती हो, तो हम कहते हैं कि इसमें एनर्जी है। और अगर उसमें काम करने की सलाहियत ना हो या कम हो तो हम कहते हैं कि इसमें एनर्जी कम है। बात समझ आ रही है बोला? सो द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब मैं बोला डेली लाइफ से आपको एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग सुबह बगैर नाश्ता किए हुए कॉलेज आते हो, यूनिवर्सिटी आते हो, ठीक है, तो आप उसी तरह एफिशिएंट नहीं होते, क्लास भी आप दिलचस्पी के साथ नहीं लेते, कोई दूसरा काम आपसे करने को कहा जाए आप नहीं करते, यानी आप में काम करने की सलाहियत क्या होती है गुला? कम होती है। वजह क्या होती है? आप में एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग नाश्ता किए बगैर हुई होते हो। सो कहने का मकसद ये है कि अगर हम में काम करने की सलाहियत है तो हम में एनर्जी है। अगर हम में काम करने की सलाहियत नहीं है तो या हम में एनर्जी बिल्कुल कम है या बिल्कुल ज़ीरो है। बस समझ आ रहे गुला? अच्छा, अब एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, अगर खुदा न ख्वास्ता हमारी एनर्जी ज़ीरो हो जाए, क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तो क्या होगा? शाबाश, फिर हम काम कर सकते हैं? जी बोले शाबाश। नहीं, अगर खुदा न ख्वास्ता हमारी एनर्जी ज़ीरो हो जाए तो फिर हम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, हम मर चुके होते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर खुदा न ख्वास्ता हमारी एनर्जी ज़ीरो हो जाए तो हम क्या हो जाते हैं? हम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, हम मर जाते हैं। बात समझ आ रही गुला? अच्छा, अब इसकी एसआई यूनिट क्या है? सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और 1 जूल मेरे पास बराबर है 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की तरफ। So basically we are having two types of energy which are kinetic energy and potential energy. Now what is kinetic energy and what is potential energy? Let's define and explain them one by one. Now let's define and explain kinetic energy. So kinetic energy can be defined easily from its name, that the ability of a body to do work due to its motion is called kinetic energy, or we can say that the energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. यानी इसको देखिए, kinetic means motion and energy means ability to do work. So we can say that the ability of a body to do work due to its motion is called kinetic energy, or we can say that the energy of a body possessed due to motion is called kinetic energy. Mathematically, kinetic energy can be written as Ke is equal to half mv square, where this Ke represents the kinetic energy, this m represents the mass of the body, and this v square represents the velocity of the body. So let's derive this mathematical form. So as we know that work done is equal to F into S. This is equation number first. We also know by Newton's second law that F is equal to ma. So put this value here. So equation number first implies that work done is equal to ma into S. This is equation number second. Now here we will put the value of S. So for finding the value of S, we used third equation of motion, which is as you know that 2as is equal to vf square minus vi square. This implies that S is equal to vf square minus vi square divided by
2a. Now putting this value here in equation number 2, so equation number 2 implies that work done is equal to m a, और इसकी जगह हम पुट करेंगे वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर 2a. Now this a cancel with this, so this implies that work done is equal to half m vf square minus vi square. This is equation number 3. Now initially the body is at rest, so its initial velocity is equal to 0. So by simplifying this we get that work done is equal to half m vf square, or simply we can write that work done is equal to half mv square. Now here this work done is equal to kinetic energy. Why? Because the body is in motion, so we can say that kinetic energy is equal to half mv square, which is our required result. thus आसानी के साथ हमने काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकली डेराइव कर दिया या प्रूफ कर दिया. ठीक है गोला. Now let's define and explain potential energy. So here potential means hidden, and hidden means छुपी हुई, and energy means ability to do work. So we can define potential energy as the hidden energy possessed by a body due to its position is called potential energy. ठीक है बोला. यानी किसी जिस्म में उसकी पोजीशन के लिहाज से जो छिपी हुई एनर्जी है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mgh, where this P represents potential energy, this m represents the mass of the body, this g represents the gravitational acceleration, and this h represents the height. So now let's define mathematical form of potential energy with the help of this diagram. So let us consider the diagram. Here this represents the ground and this represents a body of mass m. अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी पे ऊपर की जानिब एक फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से बॉडी इस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और यहाँ तक पहुँच जाता है. ग्राउंड से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इससे जाहिर करते हैं, और ये किसके बराबर है, एच के बराबर है, हाइट के बराबर है. ठीक है. तो अब अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ ऊपर की जानिब और ये डिस्टेंस भी कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है, तो मेरे पास क्या हो जाता है बोला, वर्क डन हो जाता है. सो एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एस. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हियर F is equal to W is equal to mg and S is equal to height. So putting these values in equation number first, so equation number first implies that work done is equal to mgh. Now this work done will stored in the body in the form of potential energy, so we can say that PE is equal to mgh, which is our required result. यानी हमने आसानी के साथ पोटेंशियल एनर्जी को मैथमेटिकली डिराइव कर दिया.